Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार लेकर के आए हैं, उन पर हम चर्चा भी करेंगे। और आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। अनुभा। Thank you, Nikhil. India's economic growth forecast for the current fiscal year raised to 6.3% by IMF. India's contribution to global GDP would almost be on par with China by 2028, says Barclays. And key domestic share indices end in green. Sensex jumped 566 points. Nifty closed at 19,689. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था बार्कलेस ने कहा, वर्ष 2028 तक वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान बढ़कर चीन के बराबर हो जाएगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 566 अंक का उछाल तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,689 के स्तर पर बंद हुआ। India's economic growth forecast for the current fiscal year has been raised to 6.3% from 6.1% earlier, the International Monetary Fund said in its October 2023 World Economic Outlook report released today. The global lender expects India's retail inflation to rise to 5.5% in 2023-24 before easing to 4.6% in 2024-25. Growth in India is projected to remain strong at 6.3% in both 2023 and 2024, with an upward revision of 0.2 percentage points for 2023, reflecting stronger than expected consumption during April-June, the IMF said. The country's current account deficit is expected to remain at 1.8% of GDP in FY24 and FY25, the IMF added. Ms. Ramchandran, good news coming out of the IMF's World Economic Report. And of course, it has raised the India's GDP growth forecast to 6.3%, which is very near to what the Finance Ministry and RBI here are, have said. They have forecast 6.5%. How do you look at it? Well, definitely it shows that India is seen as being resilient to the global challenges that are affecting the rest of the world economy. We have been able to improve our industrial output. We have been able to maintain agricultural output. Our demand is looking good. Our revenue inflows are good. I think one of the indicators in the last few days, we have had some very positive indicators for the economy looking forward to the festive season. Number one is that GST collections, the goods and service tax collections for September, have gone up to 1.63 lakh crore in September. Then, of course, you have the data coming in for the core sectors, the 8 industries which comprise the infrastructure sector, and they showed an increase of 12% in August. Now, this is a 14-month high. And it's also important to note that these 8 industries comprise nearly 40% of the index of industrial production. So when the IIP comes out, you can expect, a commensurate improvement in the IIP as well. And then, of course, we have had all the reports that you have seen in the pink papers about the record sales or very high sales of passenger cars, smartphones, as well as white goods. The only weakness that we are seeing is certainly in the rural areas where, because two-wheelers are largely sold, at least 50% of the sales are in rural areas, there the sales are not doing so well. And this is certainly an issue that is an area of concern.
सुषमा, अगर आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो अप्रैल से लेकर जून की तिमाही में खपत हमें बढ़ती हुई दिखी है और आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया है। ये कहीं ना कहीं हमें कोविड के बाद एक तेज रिकवरी को दर्शाते हैं। तो जो तेज रिकवरी हो रही है, इसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की हुई है, जिसकी वजह से ज्यादातर संस्थाएं भारत के पक्ष में ही अपने विचार रख रही हैं। देखिए, फेस रिकवरी हमारी हो रही थी, आई मस्ट से, जब तक फरवरी 2022 में यूक्रेन वॉर का ये शुरुआत हुई। उस वक्त लग रहा था कि मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे देश में भी और कई और देशों में भी, लेकिन उस वक्त सारी जो हमारी आशाएं थी उनके ऊपर काफी पानी फिर गया, क्योंकि तेल की जो कीमतें थी जो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत बढ़ गई। तो उसमें थोड़ा सा हमारे देश में सेटबैक हो गया, इन्फ्लेशन प्रेशर भी आ गए। और ये लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये सिर्फ हमारे देश में नहीं थी, ये बाकी देशों में भी, डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी थी, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी थी। लेकिन जिस तरह हमारे देश ने इन परिस्थितियों को जूझ लिया है, जिस ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये देखने वाली बात है। और यही बात IMF की कही है कि इंडिया इज रेजिलिएंट। हमारी जब हालांकि एक्सटर्नल हेडविंड्स इतनी ज्यादा आई हैं, फिर भी जो फेस रिकवरी हमारी, जैसे आपने बात की, कोविड के बाद आई थी और उसके बाद फिर हमारे ये थोड़ी सी हमारी सेटबैक हुई, उसके बाद भी ये हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो ग्रोथ पाथ है अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। Sushma, but the IMF in its report has also, said that the overall global growth remained low and uneven, despite the remarkable strength of the US economy. And in fact, it has cut the forecast for China and Euro area as well. So we'll come to China later on. But how do you see this, this statement by the IMF that overall global growth has remained low and uneven? Because ultimately, global growth will also affect India's growth in the long run. Yes. There's no doubt that the impact of these external headwinds will take its toll on the Indian economy, and they have already taken so. If we have not talked about India, merchandise exports, especially, which have been rising very rapidly last year, and we have reached a record level in 2022, and even 22-23 was extremely good. But for the last 8 to 9 months, there has been a consistent decline, a gradual decline in merchandise exports. And this is because of the reduced demand in developed economies, markets of Europe and US, which are facing recessionary conditions. So yes, we have to deal with these challenges also, because this is a globalized world. And so this is one area. The second area that we have had to face challenges is in the area of oil prices. Ever since the Ukraine conflict, oil prices have shot up, and this year again they came down from January. Now again in the last 2 months, again oil prices have gone up. So this is again a very difficult situation for a country that imports over 85% of its requirements. So yes, these are issues that India has had to deal with. But despite these challenges, the country has been able to maintain a fairly satisfactory growth level. सुषमा, अभी अगर हम IMF के विचारों पर ही थोड़ा सा ध्यान दें तो IMF के अनुसार ऐसा कहा गया है कि चीन में लगातार कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें संकट के आसार हमें दिख रहे हैं। खासतौर पे प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी उनका डाउनफॉल देखा गया है। ये संकट को दर्शाता है। निवेश में भी कमी आई है बहुत ज़्यादा, ऐसा IMF का कहना है। और IMF ने ही दबे शब्दों में ये भी कहा है कि जो निवेश चाइना में जाता था वो भारत की ओर धीरे धीरे अपना रुख कर रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बात है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे 5-6 महीने से 1 साल से ये हो रहा है कि जिसको चाइना प्लस 1 पॉलिसी है, खासकर जो अमेरिकी कंपनीज, उनकी काफी सारा पैसा उन्होंने बेच किया चाइना में। तो अब उनको ये डर लग रहा है कि चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, और
उसमें ये भी है कि जो चीन और यूएस की जो रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो चाहते हैं कि अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर चीन बहुत हो रहेंगी, लेकिन आगे की जो एक्सपेंशन है वो और देशों में रखेंगे। और इसमें इंडिया भी है, वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है। हम सब 3-4 देश हैं जिनमें ये अभी ये पैसा और ये निवेश आ रहा है। ये हम ये नहीं कह सकते कि सारी कंपनीज हमारे पास आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे अभी IMF ने भी ये कहा, अगर एक बहुत बड़ी बिग टेक कंपनी एप्पल ने अपने जो फैक्ट्रीज हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु में शुरू किए हैं, और वो भी धीरे धीरे चाह रहे हैं कि चीन से हटा के वो भारत में लगा दे। G. Moving on, with 8% growth, India's contribution to global GDP would almost be on par with China by 2028, Barclays said in its report today. The report calls for more public investment to drive the structural shift upwards in overall investment and put the GDP growth rate closer to 8%. In order for India to become the biggest driver for global growth, even overtaking China, it would need to target an 8% growth, Barclays said in its report. According to Barclays analysts, India's growth has outperformed the rest of the world, achieving robust expansion with relatively low inflation, and it is on way to achieve at least 6% GDP growth while keeping broad macro stability intact. Calling India's investment turnaround remarkable, the report highlighted that this change in India's investment appeal comes only a decade after it was part of the so-called Fragile Five economies, where it was facing significant macro instability in the form of a heavy debt burden, an unstable financial sector, and a weak fiscal profile policy conditions. Sushma, this Barclays report, of course, has said that we need a 8% growth to be, on par with China by 2028. Of course, what are the main points here? What are the, policy decisions and changes and drivers that are going to push us towards this 8% growth so that we can be on par with China? I think the number one issue that we still have in our country, although we talk about the fact that we have improved the ease of doing business. Yes, we have, certainly. But even now, if you talk privately to corporates, whether they are domestic corporates or foreign investors, they talk about the difficulty of doing business in this country. So there are still a lot of rules, regulations, and clearances that have to be done. And I mind you, this is not taking away from the fact that the government has done a lot of work in reducing these. One of the things that they have done, for instance, is decriminalizing a lot of the corporate laws. And they have got rid of outdated laws. Hundreds of outdated laws have been dealt with. But even then, for instance, at the state level, there still remain many, many clearances. So these are areas that, this is a very, very big area. Red tape still remains in our country. We have to deal with this issue because we just now talked about countries with the China plus one policy who are looking to shift from China to other countries. They see countries like Vietnam and Indonesia where the procedures and regulations are much easier. It's much easier to set up a business. It's much easier to get electricity supply. It's much easier to buy land. So these are the, I would say, nitty-gritty. These are small things. But for a company that seeks to invest in India and set up its projects, these become major hurdles. So this is, I think, one of the biggest areas that we need to focus on. And I think it's not that the government is not conscious of it. It is conscious. I think even state governments are very conscious of it because they are trying to lure investment to their, to their own states. So this, but still, we do need a big push in this area. And Sushma, the report is also saying that we have to, to be on par with China, it will take at least till 2028, which means the China story, despite all the crises that the country is facing, the markets and everything else, the property sector, the China story is not really over. And we have seen China, coming up and recovering in the past as well. I'm sorry, your voice is breaking a bit. Could you repeat that kindly? Yes. So I'm saying that according to the Barclays report,
for India that to be was the thought, on yeah. par with China, it will happen only by 2028, and we need an 8% growth rate for that. The fact of the matter is that despite all the crisis that's happening in China, despite all their problems at the moment, the China story obviously is not over, because we have seen in the past that China has recovered and come back. Yes, 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 no doubt. China has recovered and come back. And certainly they also, I mean, we talk about India. China certainly has resilience because they began their reforms much earlier than us. And they were way ahead in terms of foreign direct investment inflows before us. So they are, they're quite many leagues ahead of us. And they are able still to lure a lot of foreign investment because of the easy investment policies. But at the same time, there is gradually a feeling that even if India is a slightly more difficult market, there's a feeling that India, in the long run, will prove to be a more productive, more efficient. And the fact that India is a democracy, that there's a rule of law, you can go to court, you have a recourse, whereas in China, you do not have much of a recourse if there's a problem. But in this country, you do have recourse, you do have courts, and courts in this country have ruled in favor of corporates. Yes. For instance, in the Vodafone tax case, it was the Supreme Court which ruled actually in favor of Vodafone. But of course, then the government changed the law, so that was, of course, a different thing. But so courts are very fair in this country, and so I think despite that, the fact of China's resilience, India looks to for the future, for the long term. Given also the fact its demographic dividend, we have a very young population. That and the potential of demand growing in the years to come these are all factors that would weigh with investors. जी सुषमा, अगर ग्लोबल ग्रोथ की हम जब बात करते हैं तो इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, यूटिलिटीज, स्टोरेज, टेलीकॉम और एआई जैसे सेक्टर्स में अच्छा खासा निवेश करना शुरू कर दिया, जिसका असर हम आज वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं. अभी खास बात यह है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग कल से होनी है, 15 अक्टूबर तक की मीटिंग चलेगी. इस मीटिंग से बहुत कुछ ऐसा निकलने की संभावना है जो भारत के पक्ष में रहने वाला है. इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आपकी भी आवाज थोड़ी कट रही है, सॉरी, वो लाइन ठीक नहीं है, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? मैं सुषमा जी, मैं ये आपको दोबारा बोलता हूँ. ग्लोबल ग्रोथ में जहां तक भारत का अपना एक हाथ है, जो हम काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, माइनिंग हो गई, वगैरह में, हाँ जी, यूटिलिटीज है, स्टोरेज है, टेलीकॉम है और एआई है. ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें वर्तमान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा निवेश किया है, जिसका असर हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं. अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हो रही है 11 से 15 अक्टूबर तक, यानी कल से शुरू होगी. इसके असर हमारे पक्ष में किस तरह से हो सकते हैं? हमारे पक्ष में आपका सवाल मैं समझी नहीं. मैं या तो मेरी सुनाई नहीं दे रहा, या सॉरी. मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, जो भारत में अब निवेश कर रहा है नए सेक्टर्स में, उनका क्या रिजल्ट होने की संभावना आपको लगती है? अब हाँ, हमारे देश में जो अपग्रेडेशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. काफी वैश्विक स्तर पे भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इनफैक्ट कोविड के टाइम से ज्यादा हुआ है. हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शुरू हुई है, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि हमारी सरकार ने उस वक्त बड़ी मॉडरेट पॉलिसीज अपनाई थी. और उस वक्त मैंने भी, कई लोगों ने निंदा की कि ये काफी नहीं कर रहे, उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नहीं कर रहे, और ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं. और उस वक्त मैंने भी क्रिटिसाइज किया कि शायद हमारे देश में ने अब बाकी यूएस, अमेरिका की तरह हमने इतने पैकेजेस नहीं दिए. लेकिन उसका फल अब दिखाई दे रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका फल ये हो रहा है कि अब जो सड़कें आ रही हैं, जो पोर्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, और उसमें वहां पर जॉब्स की जो स्थिति है, जॉब्स अवेलेबिलिटी आ रही है, और उसमें ये ग्रोथ को इम्पेटस मिल रहा है. तो ये काफी लॉन्ग टर्म व्यू लिया था
गवर्नमेंट ने। चलिए सुषमा, अब हम शेयर बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,600 अंक के ऊपर जाकर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,600 अंक को पार कर गया। सेंसेक्स आज 566 अंकों के उछाल के साथ 66,079 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 177 अंक की तेजी के साथ 19,689 अंक के स्तर पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.1% के लाभ में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.2% की बढ़त देखी गई। Key domestic share indices today ended in green with about 1% up. The BSE Sensex closed above the 66,600 mark while the Nifty crossed the 19,600 level. The Sensex jumped 566 points and settled at 66,079 while the Nifty gained 177 points to close at 19,689. In the broader market at the BSE, the mid-cap index advanced 1.1% and the small-cap index appreciated 1.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 26 companies were in green, while shares of the rest 4 companies closed in red. Bharti Airtel soared 2.9%, Kotak Bank jumped 2.1%, and Tata Motors gained 2.1%, whereas IndusInd Bank plunged 0.5%, TCS fell 0.2%, and Titan lost 0.09%. All 20 sectoral indices at the BSE closed in green. The realty sector gained 4%, metal index rose 2.5%, and services sector was up 1.9%. The overall market breadth was positive as shares of 2,553 companies advanced and shares of 1,103 companies declined. A total of 133 shares remained unchanged. और रुपए पे नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 83 रुपए 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 105.80 पर कारोबार कर रहा था। Sushma, we saw yesterday because of the conflict in the West Asia, we saw the markets plunge more than 480 points. But today, thankfully, they have recovered. In fact, the markets have closed. The Sensex has closed, jumped 560 points. What are the reasons? I mean, it's a positive development for the equity markets. So it seems like that the Middle East conflict has affected the markets only temporarily. Yes, it's in fact. That is quite surprising. I was expecting the markets to recover, but I did not expect them to recover so fast. Well, there are two reasons. One, the major reason is, of course, the Federal Reserve has given an indication that, it will likely give a pause to its rate hikes. That's a major issue. And that, in fact, is what has infused the, American stock markets also, and the Asian stock markets. So that's one big factor. The other factor for India is the domestic issues. The fact that but crude prices also seem to have moderated, and that the market is now looking forward to the second quarter results for corporates. So the market seems to be focused largely on domestic issues, and domestic, as we talked about just recently. Just now, that the domestic indicators are looking so good. It looks as if festive demand has already started, and sales of a wide range of products are doing extremely well. So this is the kind of focus of the domestic market. But I don't know whether this will continue, because if the conflict is short term, well, then it will, it may not affect the markets. But if it tends to involve other countries, if you're going to have Iran coming in, you've already got the U.S. sending its, its aircraft carriers into nearby Israel, into the ocean. It may not in the medium term. We may have some problems. Of course, as far as crude is concerned, analysts are saying, well, Israel and that area is not a major producer of oil, but it doesn't have to be a producer of oil. The ripple effect can affect oil prices. I mean, Iran is certainly a major producer of oil. So we really have to see over the days to come what happens. सुषमा, बहुत ही कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि वैश्विक स्थिति का बाजार पर असर पड़ता है और बड़ी कंपनीज खासतौर पे फार्मा, कार्गो और बैंकिंग या मेटल सेक्टर काफी प्रभावित हो सकते हैं, और लगभग 500 कंपनियों का जो इजराइल की कंपनीज है उनका भारतीय बिजनेसेस में अपने शेयर्स भी हैं, तो निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए?
आपका मतलब इजरायली कंपनीज की तरफ है? जी हाँ, दोनों को मिलाकर के भारतीय इजरायली दोनों, क्योंकि 500 के आसपास कंपनीज का भारतीय शेयर मार्केट भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मेरे ख्याल वेट एंड वॉच अप्रोच होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी होनी चाहिए। जी चलिए, अब एशियाई और यूरोपीय बाजार पे हम नजर डाल देते हैं। वॉल स्ट्रीट की खबर के परिणाम स्वरूप आज एशियाई शेयर बाजारों में तेजी आई और बॉन्ड में भी बढ़त देखी गई। फेडरल रिजर्व के नरम रुख से भी इसमें उछाल आया है। कल तेल की कीमतों में उछाल के बाद आज कमी आई और बाजार में मिडिल ईस्ट के संघर्ष का असर भी नजर आया। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.21% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.63% की तेजी आई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.39% के उछाल पर रहा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.26% लुढ़क गया और उसके बाद चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% नीचे आ गया। यूरोपीय शेयर बाजार में भी आज सकारात्मक रुख देखा गया। लंदन का FTSE 100 1.57% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक में 1.49% की बढ़त हुई और जर्मनी का डेक्स 1.69% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US markets, the three major US indices closed higher on Monday, while energy stocks rallied as investors digested the latest news about the conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas. The Nasdaq Composite appreciated 0.39%, the S&P 500 jumped 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.21%. Sushma, very quick comment. Do you think it has also to do with the fact that US Fed officials have decreased the odds of further interest rate hikes by the US Fed Reserve? Yes, definitely. The dovish comments by the Fed has definitely had an impact on markets, not just in the US, but I think all over the world. Right. Moving on to commodities, oil prices remained flat on Tuesday after rallying more than 4% in the previous session, with traders cautious as they watched for potential supply disruptions amid military clashes between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas. Brent crude oil futures traded at $88.24, whereas Western Texas Intermediate was trading at $86.47. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध के लिए सोने के मूल्य में आज 30 रुपए की बढ़त देखी गई। सोना 57,602 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें, दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 206 रुपए टूटकर 68,888 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,871 और 40 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी उछाल के साथ $21 और 88 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Sushma, when we see that geopolitical conflicts such as the Israel-Hamas conflict happens, investors tend to move towards precious metals, and we've seen today that the gold prices have gone up. Do you expect the prices to go up even further? Well, definitely. If this crisis continues, gold is is a safe haven asset, and it is bound to go up. It has already shot up. Let's see what happens further. Coming to crude oil, yesterday, of course, we saw a 4% surge, but now the prices have stabilized, and people are looking at that surge as a short-term surge. But how do you see the volatility in the oil price market or the oil market to continue, and how further do you see the prices going? It is bound to continue for the time being. I don't think they will go up very high, but in any case, for next year, analysts are still saying that we are seeing a price of $90 to $100. Now, if this crisis continues, obviously it will shoot up to $90. But as of now, it has moderated. Saying that, well, there's not much impact of Gaza and Israel on oil producers, but that's not true. So we have to really see what happens now. सुषमा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। Now, before we close, a reminder of the headlines. India's economic growth forecast for the current fiscal year raised to 6.3% by IMF. India's contribution to global GDP would almost be on par with China by 2028, says Barclays. And key domestic share indices end in green. Sensex jumped 566 points. Nifty closed at 19,689. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time at 6:30 p.m. with yet more news from the world of economics, finance and stock market. Do join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, this is Anubha Rohatgi and Nikhil Kumar saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.